A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with the last lecture of chapter Measurement of National Income or Methods of Measuring the National Income, and this lecture is devoted to the numerical part. Previous lecture was also devoted for the numericals, and today we are going to start with the two numericals based on calculation of national income by income and expenditure method. Let's start the first numerical. Calculate gross national product at market price by income and expenditure method. First, what we have to do? First of all, we must write the formula. So पहले हम income method का formula लिखते हैं. You know this. According to income method, compensation of employees plus operating surplus plus mixed income is equal to net domestic product at factor cost. ये हमने पढ़ा है. अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यहां पर तो सीधा सीधा दिया हुआ है. ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या हो सकता है? प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड रेंट. इसके पार्ट्स भी हो सकते हैं. प्रॉफिट के तीन पार्ट्स, लुक हियर, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स. सो प्रॉफिट के तीन पार्ट्स दे रखे हैं. इंटरेस्ट इज गिवन, रेंट इज गिवन और मिक्स्ड इनकम इज नॉट गिवन. तो हम पहुंच गए एनडीपी फैक्टर कॉस्ट. अब देखो, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से हमें पहुंचना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. लुक, नेट टू ग्रॉस, तो वी विल ऐड डेप्रिसिएशन. Domestic to national, we will add net factor income from abroad. Factor cost to market price, उसमें करते थे माइनस NIT, यहां हो जाएगा प्लस NIT, net indirect taxes. Now let's put the values. पहले इसको करते हैं. COE, look here, COE is compensation of employees 400 plus operating surplus. Look, this is rent, interest, dividend, undistributed profit and corporate tax. These three is a profit. 45, 50, 60 profit plus interest is 30 plus rent is 20 and mixed income is not given. So 400, 460, 490 plus 20, 510 is the domestic income. Now 510 is the domestic income or NDPFC. Now what we have to do? We will add depreciation. This is given, look here, 10. We will add 10 plus net factor income from abroad, it is minus 10 plus net indirect taxes. This is plus net indirect taxes given 50. So 560 is gross national product at market price by income method. ये पहला मेथड हमारा कंप्लीट हो गया, इनकम मेथड. अब करते हैं हम सेकंड मेथड, इज अ एक्सपेंडिचर मेथड. अब एक्सपेंडिचर मेथड में हमें पता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. नाउ दिस इज द सेकंड मेथड वी आर डूइंग. प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू जीडीपी एमपी. अब देखते हैं यहां पर क्या क्या दिया हुआ है. लेट्स चेक द वैल्यूज. First is a private final consumption expenditure 400, government final consumption expenditure this one 100, gross domestic capital formation, look here, this is net. Now it is net domestic capital formation given, so ये value आएगी net में NDPMP. So net domestic capital formation is 50 plus net exports. Net exports is given 10. 400 plus 100 500 plus
550 and 10 560. This is NDP MP. Now from NDP MP we have to find GDP GNP MP. Look, we have to find GNP MP. So PFCE already, let's check it once again. PFCE is 400, GFCE this one 100, net domestic capital formation is 50 plus net exports is 10. So 400, 500, 550, 560, right? So from this to this we have to reach GNP MP. I will writing it here. Net to gross we will add depreciation. Domestic to national we will add net factor income from abroad. So depreciation is 10, 560 plus depreciation is 10 and minus this is 10. So 560 is the answer, which is again same by both the methods. तो बेटे ये आपने देख लिया कैसे हमने इनकम मेथड से पहले फाइंड किया और फिर एक्सपेंडिचर मेथड से. अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं. सेकंड न्यूमेरिकल यू सी इट इज वी हैव टू फाइंड नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड. सो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड. Again, what we have to do? First we will write the formula. Start writing the formula. First is by income method. Income method में क्या होगा? Compensation of employees plus operating surplus plus mixed income is equal to net domestic product at factor cost. You see here compensation of employees नहीं दिया हुआ, wages and salaries दे रखा है. So we will add 500. उसके बाद कुछ और नहीं दे रखा, बस वेजेस एंड सैलरीज गिवन, नथिंग इज गिवन. अदरवाइज 3 पार्ट्स, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, बट हियर ओनली वेजेस एंड सैलरीज गिवन. सो सीओई की जगह ये आ गया. ऑपरेटिंग सरप्लस इज PIR, पीर, P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट. लुक हियर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, दिस बोथ इज इक्वल टू प्रॉफिट. तो ये आ गया प्रॉफिट 120 प्लस इंटरेस्ट यू सी नंबर 4 40 प्लस रेंट एंड रॉयल्टी. रेंट इज गिवन 50 एंड रॉयल्टी इज 20 प्लस 50 प्लस 20 एंड मिक्स्ड इनकम इज नॉट गिवन. सो 500 प्लस 120 620 660 710 plus 20 730 is the domestic income. अब बहुत आसान है. From NDPFC we have to find NNPFC. Look here. So NNN no change, net. Factor cost no change. From domestic to national we will add net factor income from abroad. तो देखो 730 plus net factor income from abroad is -5. So plus minus 725 crore is the national income by the income method. This is first one we have done. Now we start the second one. Second one is by expenditure method. Second is by expenditure method. आपको फिर मैं बार बार कहूंगा, फॉर्मूला लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू जीडीपी एमपी. अब देखो यहां क्या दिया है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहां पर सीधा नहीं दे रखा, यहां दिया है उसके पार्ट्स. हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 600 प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 30. ये दोनों मिला के बन गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज क्लियरली गिवन 120. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लुक हियर इट इज गिवन नेट, तो यहां पर आपका बनेगा ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और यहां पर भी नेट में आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस.
सो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो चीजों से बना है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक 10 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स -20, 630 प्लस 120 750, 750 प्लस 70, 750 प्लस 70 820 -20 800 इज द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो हमें कहां पहुंचना है, NNP एट FC जिसको बोलते हैं नेशनल इनकम। ध्यान दो, नेट नेट नो चेंज, डोमेस्टिक टू नेशनल वी विल ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब क्या हुआ, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। लेट्स पुट द वैल्यू 800 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -5 minus indirect taxes, this one 100, look here, indirect tax -100 plus subsidies 800, 795, 695 plus 30, 725 crore is the national income by expenditure method and 725 crore is the national income by income method. So these are the types of the numericals you will get. You have to practice more numericals from the book TR Jain, Core Economics or Radha Bauguna or Sandeep Garg. Every book is good, only you have to practice. So I request you all to work sincerely and at the same time prepare your notes and revise the topics. God bless you all.